ओ बच्चों तुम्हें बताए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बली। यहाँ पे इन कंटिन्यूशन ऑफ आवर पार्ट्स दिस इज द रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, टारगेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिया है। दिस इज द प्लॅन ऑफ सिंथेसिस, व्हॉट इज द अनालिसिस, याचं अनालिसिस आपल्याला इथं करायचं आहे। In given compounds there are two types of the function group, one is olefin and another is a carbonyl compound, that is ketone. First of all, how to obtain these types of the spaces if you have the CC bond disconnection। यहाँ पे हम ये CC bond disconnection करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है CH3 negative charge और CH3 positively charged and this one is negatively charged. So this is what I am writing, this is the directly synthetic equivalent, this is what methyl iodide. Again what, CH3 C double bond O CH2 CH2 and this is what this one is the double bond, this negatively charged. Whenever this negatively charged is there, so this as you can say synthons, what is the synthetic equivalent of such types of the spaces if are in the synthetic equivalents here, so that is the double bond is here. So double bond, first of all we want to this FGI, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, FGI करेंगे पहला। So first we want to the FGI, पहला स्टेप हम इसको FGI करते हैं, FGI करते हैं FGI। दिस इज द मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करेंगे FGI। FGI करने के बाद ये CH3 मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो दिस CH2 CH2 अगेन दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस वन इज द CH3। अब हमें यहाँ पे करना है ये CC डिस्कनेक्शन, वन CC डिस्कनेक्शन, वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन CH2 CH2। यहाँ पे आएगा हमारा CH, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं, सॉरी दिस इज द मेथिल आयोडाइड CH3I। ओके, सो व्हाट इज दिस अगेन, so we are to having this is the H is there directly written, this is the as a form of this is the synthetic equivalent is CH3 C double bond O CH2 triple bond is here. So again this is the retrosynthetic plans, what is that, if you are to the break such types of the bond, if you are to the break such types of the bond, it means that this CC bond disconnection, this CH3 C double bond O and this is going to the formation of what, COOET, this COOET and plus what these types of the species, as you can say CH3 and this CH2 and C double bond triple bond is here. So as we can say this is the reactant species, we have been obtained these types of the reactant species if these two reactant species are reacted in presence of basic condition। First what is the plan of the synthesis, अब यहाँ पे हमें synthesis plan देखना है। ये species हमने create किया, so this is what CH3, as you can say first of all we can take this is the bromine atoms in presence of the basic condition। If you can take CH3 C double bond O COOET, in the first of all you can take this bromine atom CH2 and this is the this is what in presence of the basic condition, base is here, as you can take base and this one is a triple bond is here। So what happened, this is the types of the nucleophilic, this carbon ion is attack on these types of the base is abstract proton from here and this carbon ion attack on these types of the bromine and lost, this is what, so what happened, CH3 C double bond O, this is the COOET is as it is and here CH2 this triple bond is here। So what happened, the next step, so here we have been obtained these types of the species, again we want to these types of the species if you have to the hydrolysis। अब यहाँ पे important बात क्या है कि यहाँ पे ईस्टर है और यहाँ पे कीटोन है, तो यहाँ पे हमको प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन फॉलोड बाय डिप्रोटेक्शन। So if you have to reduce these types of the ester and both are what, it is reduces, but whenever is this is the sodium borohydride, this chemoselective reagent is what, sodium borohydride, but here is a triple bond, but first of all we want to this is the protection। अब डायोल यहाँ पे डायोल इसलिए लेना है, डायोल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस बिकॉज ऑफ इट रिड्यूस इट इज प्रोटेक्ट टू दिस कीटोन नॉट टू ईस्टर, इट प्रोटेक्ट टू कीटोन, देन व्हाट हैपन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, here O and this one is O, this going to the formation of this is the COET, this CH triple bond C is here and this one is the COOET। So what happen next step, we have to addition of this sodamide, this base हमें यहाँ पे लेना है NaNH2 sodamide, sodamine is treated with the sodamine, what happen, this treated with the sodamine, this reacted with these types of the species and what happen, there is formation of what, diol NaNH2 and methyl iodide। Here we can take this is the methyl iodide, this proton it abstract proton from here and becomes to formation of the methyl iodide and what happen, here formation of what, again this species is what happen, first step is takes place is methyl iodide is created here and the second step is what happen,
The second step we have to addition of what here H2PD. This is addition of water here. यहाँ पे हमको इसका प्रोटेक्शन करना, डी प्रोटेक्शन करना है. So that is what H plus acidic condition. Then formation of what CH3 C double bond O. This COO it is as it is, and we have to this reduces this hydrolysis again. Hydrolysis in acidic condition again here water. So what happen here, loss of the CO2 minus CO2 after hydrolysis. Then here formation of what CH here triple bond C, and this one is the CH3. So these types of the species is generated, and the last step it is by using the Rosenman catalyst. As you can say, these types of this order linear catalyst is S2PD, S2PDC is here, and BaSO4 barium sulfide. So these types of the reagent, this is called as the linear catalyst, which is most helpful for the preparation of the cis alkyne to what alkyne to what cis alkene, alkyne to cis alkene, and here formation of what target compound. We can repeat here. First FGI, यहाँ पे FGI किया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड करते हैं रिडक्शन होता है. दिस इज बाय यूजिंग व्हाट लिनियर कैटलिस्ट फॉर्मेशन ऑफ द सिस अल्कीन. दिस इज द सिस अल्कीन. सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पे सीसी डिस्कनेक्शन किया, सीसी डिस्कनेक्शन इथं आपण केलंय. सीसी डिस्कनेक्शन करने के बाद मेथिल, यहाँ पे मेथिल आयोडाइड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, एंड इसका सिंथान, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखा हमने CH. सो यहाँ पे है डायरेक्टली वन ऑफ द हाइड्रोजन आइटम टू दिस कार्बन. So what happen again? The next again the FGI. So there is for this carbon is converted into this what? Sorry, CC disconnection, not FGI. CC disconnection यहाँ पे किया. So there is formation of two reagent species is there. So what happen in the plan of the synthesis? We are having these types of the reactant species. These two reactant species is reacted in presence of basic condition. These two reactant is react in the basic condition in the plan of the synthesis. Then formation of such types of the product. Then what happen next? We are having this is the ester and the ketone. First we want to the protection. Protection followed by deprotection यहाँ पे करना पड़ेगा. इसका प्रोटेक्शन करने के बाद इसका रिडक्शन करना है. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन किया और इसका रिडक्शन किया. सो दिस व्हाट रिडक्शन. एज यू कैन से दिस हाइड्रोलिसिस एज अ रिडक्शन. यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन. सो बाय यूजिंग द रिडक्शन these types of the species, this is the ester is converted into water, as you can say alcohol, that is the part of the H2. again using water, these types of the water sodamide, यहाँ पे हम sodamide यूज करते हैं. और हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन करने के बाद ईस्टर का क्या होगा, एसिड होगा, और हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगा. इट मीन दैट फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द स्पीसीज. बट हियर द क्रिएट दिस इज अल्काइन. तो यहाँ पे देखो अल्काइन बाकी है. अब इस अल्काइन से हमें क्या करना है, अल्किन करना है. सो बट कौन सा अल्किन होना चाहिए, दिस सिस अल्किन. तो यहाँ पे देखो ये सिस अल्किन है. सो वी वांट टू द सिस अल्किन. इन द लास्ट स्टेप ऑफ द सिंथेसिस अल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू द सिस अल्किन, दैट इज द टारगेट मॉलिक्यूल. हाउ इट इज ऑब्टेन, बाय using the linear catalyst. Which types of the catalyst? Linear catalyst, H2PD, barium sulfide, formation of the cis alkene. When we use this the alkyne, it is react with the Birch reagent, that is a sodium or lithium liquid ammonia in ethanol, then formation of the trans alkene. So that is the part of this is the one of the Birch reagent. By using here the linear reagent, linear catalyst, so this alkyne is converted into what, a cis alkene, that is our target molecules. This is one of the plan of the synthesis, as you can say analysis followed by synthesis, as we can say a retrosynthetic approach or retrosynthesis of given target molecule.